Yes, Ghazal, you can start. Okay, sir. Good afternoon to all the participants. This is Ghazal. Welcome you all on behalf of FCP Forum to this knowledge series program. This is one of the initiatives by FCP Forum to share the experience and knowledge of the industry experts with our associates who are working in the field of fluid conveyance products. Before the start of the session, I would like to invite Mr. Nitesh Kataria, founder of FCP Forum, to apprise about the vision and mission of FCP Forum. Over to you, Nitesh, sir. Good afternoon, everyone. Just a moment, sir. I am just connecting. This screen is visible to all? No. Just a minute. Yes. Yes, sir. Yes. So, good afternoon. This is Nitesh Kataria. So, I would like to tell you something about FCP Forum, which we have launched in last month on 18th of March. We have launched this FCP Forum. So, what are the objectives of FCP Forum and why we have created this platform? Basically, this platform is like to coming together, staying together, growing together. This is an exclusive platform for professionals, business owners, technocrats, entrepreneurs, investors, and service providers who are associated with hydraulic, industrial, PTFE, thermoplastic hoses, hose assemblies, perform metal tube assemblies, nylon tubes, high pressure fuel injection tube, hose fitting, hydraulic fittings, means anyone who is like manufacturer or distributors or professionals who is involved in this business, who all can join this FCP forum. So FCP forum is like this is the platform to not only provide the technical support, it holds your hand for to the next level. So who are we? An experienced renaissance to reignite growth. Our pursuit is progress for everywhere. That is why we take a closer look at things, ask question and think it. Basically, this FCP forum is like a brainchild of few of the professionals who have worked in this industry for almost 25, 30, 35 years. And the objective is like we have already some sort of fluid, fluid power society or any other platform is there, but representation of the products of fluid conveyance product is very limited to that, and not much attention is given to this industry. But you know, this industry is also very big, almost 10,000 crore industries is there. The potential is very high. So if we can have some sort of like forum or some sort of association to raise pertinent question about this industry, then definitely we can get benefited out of this. So this is just objective. And what different thing we are doing on this forum, basically a knowledge sharing series. This series we started in the month of December, and already we have conducted 9 technical webinars on this forum. Every second and fourth Saturday at 3 p.m. we are conducting this technical webinar on different topics and different technical subjects. We are conducting this technical webinar, and industry experts are coming and they are delivering this technical webinar. So it started with from the month of December, and every second and fourth Saturday we are conducting this technical webinar. Second one is like ask the expert. So we have given one dedicated phone number, one WhatsApp number we have already given to the subscribers. And any question or any query related to this industry, it may be a very small question because everything is not available on the Google. So in case of any query, if any assembler have got some question, some like how they can clean the hoses, or
or what cutting blades they should use to cut this suction hose, or different any question, then our team is there and they will revert back to them within 72 hours. So they will answer the question, they will resolve their query within 72 hours. So this is Ask the Expert. Then FCP Times, the objective of FCP Times is like to share the news regarding the fluid conveyance industry or off-highway industry, or what are the new projects which are coming up in India, what are the new products which are being launched in the Indian market. So anything related to fluid power industry, fluid conveyance industry rather, we will be covering this all these news in this FCP Times, and it is a monthly newsletter, and it will be like it will be in the digital format only. We are not having any physical format of this newspaper, so it will be convenient to all, and the reach of this newsletter will be at least 1 lakh people. We will be sharing this newsletter to manufacturer, traders, professionals, design engineers, so everybody can get advantage of the latest updates. Then job reference, this is another feature of FCP Forum. So like in any industry, if some requirement is there for the manpower, maybe design engineers or sales engineers, or any technologies, so they can provide, they can ask us, and we will try to like share a few of the CVs to them, and they can choose the right candidate from their database. So this is in the initial stage. It may take some time, but definitely in future we'll be having the number of CVs in our data bank. Then fresh cell support is there, in case of any dead stock or any slow moving stock, we will support the subscriber of FCP Forum to liquidate that stock, so that maybe buyer or the seller can get right kind of price, or means instead of selling that in the scrap, at least they will get some better value of their product. So it will be like win-win situation to both the seller and the buyer. So this flash sale support is also, we on every quarter basis, they can provide us the data of this dead stock or slow moving stock. So we will share that data to our the people who are interested in to buy this slow moving or dead stock. And then access to exclusive WhatsApp group. We are already created almost 10 WhatsApp group, and we are adding manufacturers, traders, professionals, or end user also in that WhatsApp group, so that exchange of idea or exchange of business can be done in this platform. And last one is like tender news. Like most of these government organization and public sector units, uh, uh, they are having their requirement through tenders. So on the regular basis, we are providing this tender news to subscriber of FCP Forum, because again, government sector is one of the biggest consumer of all these products, maybe hydraulic hoses, or hydraulic fittings, or Teflon hoses. So these 7 type of different services we are providing to all the people who have joined this FCP Forum. Out of these 7 services, like knowledge sharing series, FCP Times, and access to WhatsApp group, these three services are on the free of the charge basis. We are not charging anything. Who all can join? So all the manufacturers, maybe hydraulic hoses, industrial hoses, hose assemblies manufacturer, hydraulic fitting manufacturers, all the manufacturers can join. Then those who are distributors, dealer, or stockists of these products, and the professionals, maybe sales, marketing, business development professional, hoses, design engineers, application engineers. So all these can join, and we have kept a nominal fee of 2,000 rupees plus GST to join this FCP Forum. So anyone who is interested in joining FCP Forum can join this forum by making a payment of 2,000 plus 18% GST. So this is all about FCP Forum. So
learn, grow, and succeed. So thank you. Thank you very much. And over to you, Ghazal. Thank you, Nitesh sir. Now I would like to introduce speaker of today's technical webinar, Mr. Ambarish Chatterjee. Mr. Chatterjee is an engineering graduate from IIT Kanpur and having more than 40 years of rich experience in the hydraulic hose, fittings, assembly product group, serving Indian and global corporations like Parker, Gates, Eaton, Dunlop, Industrial Products, to name a few. With a specialized training in the Gates UK facility, he is having sound knowledge and experience in the field of application engineering, system implementation, audit, upgraduation, product selection, value engineer. Now, I request Chatterjee sir to start today's session, which is on the topic hose assembly failure analysis and corrective actions. We will have question answer session at the end of the program. You can write your questions in the chat box. Thank you and have a great session ahead. Over to you, Ambarish sir. Thank you, Ghazal. See, this is one topic I would have. Can you hear me? Can everyone hear me? Yes, yes. This is one topic I would have loved to have a physical, seminar, because there are so many inputs and people have been facing this failure problems every now and then, and uh, as the day go, by the day, there are different type of failures which are coming with the different type of hoses and all those things. So it would have been ideal to have a physical seminar rather than having a webinar where you cannot uh, ask questions directly and stop me. Anyway, so within the limited framework what we have got, especially just after the COVID and all, traveling is not still that much. So I'd like to share with you as much as possible. I didn't want it to be a one-way share. It should have been a dialogue sort of a thing, but anyway, we would like to utilize this as much as possible. But would request maybe at the end of the thing, other than chat also, you can come with your voice, this thing, and you can ask questions or you can contribute to the knowledge sharing. This is the main purpose of this. So here we go. Just give me a while, please. Can you hear me properly? Can everyone hear me properly? Yes, sir. Yes, sir. So we are going to discuss the type of failures and how to analyze them. Now, I have worked with all hose manufacturers for almost the entire lifetime, and like Mr. UK Prashad is there. The only thing I found that the only lacuna I found when a problem is discussed regarding a failure and all, they generally very quietly skip off the hose failures. Okay, they never. It's always the other failures which they try to find about. I don't know whether in public Mr. UK Prashad will agree or not, but that's a sort of a fact. That is the so here we are going to discuss all
any hose assembly failure can be attributed to, it can be a defect in hose, it can be a defect in fitting, it can be a process defect in the sense you may have the best hose, you may have the best fitting, but if there is a problem in the process of assembling it, then you can have a defective hose assembly. Then another thing which quite often comes to thing is the wrong selection, mainly wrong selection of hoses, by the user, not the hose manufacturer, by the user. They sometimes do not select the right hose. They do not take all the parameters, all the aspects into consideration, and they select a wrong hose and land up with problem. Then last but not the least, installation issue and application issue. Now, very often we have found that there is no issue with the hose, there is no issue with the fitting, there is no issue with the process of selection is okay, everything is okay, but it has not been installed properly, and the hoses are failing. The hose assemblies are failing. The last is the application issue, where I will come to that. What really do I mean by application issue? Prior to that, we got to see that under how is hose life, or prior to that, how is the pressure efficiency is being affected by different aspect of application. So we go in for a more this thing. It's the same. It's a manufacturing defect in the hose, incorrect selection of the hose, defective end fitting. Then coming to the process, it may be incorrect end preparation or subassembly prior to crimping, incorrect embossing on the hose socket and all. Sometimes, incorrect embossing also leads to hose, especially by the OEMs, it is there. Then mismatch of hose fitting and crimping diameters. Then sometimes mismatch of skive and no skive fittings with skive and no skive hoses, and vice versa. Then one thing which comes once in a while with the not so organized assemblers who do not have their documentation proper, this over crimping and under crimping sort of a thing which comes. Then, of course, what I said, improper installation of hose assembly on the machine. When this hose assembly is put on the machine, quite some time they are not properly installed by the operators in the assembly line. Improper installation, hose storage is also a very important thing, which we will discuss at the later stage. Now, one of the global hose manufacturers, they have tried to analyze the total hose assembly failure. The only aspect which is missing from here is the hose manufacturing defect. So you see it's a total pie, and I've tried to put it on a simple thing. 22% has been found for improper selection of the hose or improper length. Quite some time we find that people who are making the assembly or even the OEM, they do not consider the fact that the hose can shrink by is allowed to rather shrink by 4%, and they really go in for a very tight rope hose length, and which may lead to failure in case of there's a big shrinkage in the hose. Then a big percentage has been, I cannot see this, how much, just a second. See, improper alignment where twists, multiple level plumbing, sharp bends and all come, that also is almost 1/5 of the total failures. Then routing, if the MBR norms, minimum bend radius,
if the hose is bent more than minimum bend radius, or if the elbows, in the sense bent fittings, are not properly selected. Sometimes you find that unnecessarily they're 90-degree bend and all those things. And thirdly, the hose may be rubbing against a machine. I mean, the machine infra, some part of the machine, some other hose, or some sharp edges and all those things. So that is called improper routing. Then hose and fitting mismatch also is around 1/5 of the failure rates. Now, what do I really mean by hose fitting mismatch? See, especially in India, in the Western countries, if they're using, say, Gates hose, they buy the hose as well as the fitting from Gates. Even few of them, they buy the crimping machine also from Gates, and then they, as per Gates's e-crimp data, they crimp it. But in India, it is not that. In most of the cases, or I'll say in 99% of the cases, people use a brand of hose and then reverse engineered fitting, or the fitting which are available in the market, they use that. Now, there's nothing wrong in, I mean, personally feel fine in India. There's time is still to come that you use Gates hose, Gates fitting, Parker hose, Parker fitting, because of an economic factor. Still the L1 in the commercial arena, the L1 culture is there. So, you have nothing much but to buy a reasonably cost fitting, and deliveries are also concerned. But what I mean really by mix and match is, suppose someone is using XYZ fitting which is available in the market, and using ABC hose, or let me say, for example, someone is eating an Aeroquip hose with some fitting which is available in the market. Now, when he is buying it from the market, he is given by the, most of the time he is given by the fitting supplier that this is the fitting diameter, this is the crimping diameter after you fit it. Now, what people do is, people do not take the pain. They are using the same fitting. They have got the same fitting source. Now, suddenly they might, because of techno, commercial, whatever reason, they started using, say, in place of Aeroquip hose, they started using, say, Parker hose. But what they should actually do, that they should validate it with their crimp diameters and everything with that new brand of hose. That's a very important thing, and people that's why they'll end up in problem. So that is what we mean by hose fitting mismatch, or which is called mix and match fitting. So that is one very important aspect, that at least if you are buying a new hose from a fitting from a new source, or hose from a new source, you should validate it. Now, what do I mean by validation? See, I do not expect, and I know in India, assemblers do not have impulse testing machine, which is the actual way of validating. You put 6 assemblies as per SAE J343, and then you go in for the impulse, number of impulse cycle, and see whether the compatibility between the hose and the fitting is still there with the new brand of hose and or fitting. But here we do not, since we do not have this facility available with most of the assemblers, and even hose manufacturers, half the machines are malfunctioning half the time. At least हम लोग को क्या करना चाहिए, at least बस प्रेशर तक लेके वो करना चाहिए, अगर कोई नए फिटिंग सोर्स से हम लोग ले रहे हैं, या फिटिंग सोर्स सेम रख के होस्ट सोर्स को चेंज कर रहे हैं. सो हमको एक्चुअली एटलीस्ट उसको इसको ही वैलिडेशन कहते हैं कि एटलीस्ट विद अ न्यू सोर्स ऑफ होज, आइदर और होज एंड और फिटिंग, आपको एटलीस्ट बस प्रेशर तक लेके देखना चाहिए
8-10 सैंपल करके देखना चाहिए कि हाँ ये इस होज से भी मैच कर रहा है, या इफ इट इज नॉट गिविंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट, बस प्रेशर क्रॉस नहीं कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करना पड़ेगा. सो दैट इज अ बिग, जो बहुत वेरी फ्रीक्वेंटली ये होता है कि हम लोग स्पेशली आवर स्मॉलर असेंबलर कलीग्स, उन लोग होता है कि अच्छा ये होज नहीं मिल रहा, चलो इसको लगा दे, तो कम से कम थोड़ा सा तो उसको टेस्टिंग कर लेना चाहिए. तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड there are excessive temperature के लिए भी about 3% attributes have been given to excessive temperature. Improper hose assembly, इसमें जनरली improper hose assembly में बहुत हाई परसेंटेज है. एंड क्रिम्पिंग में अंडर क्रिम्पिंग, ओवर क्रिम्पिंग तो होता ही है, वो आप भी जानते हैं. बट वो सेम थिंग उसमें भी होता है कि दूसरा होज हमने ले लिया, वी टेक अनदर ब्रांड ऑफ होज फॉर वट एवर रीजन इट मे बी, and then would try to do the same, trim diameter with the new hose. Now, उसमें देखिए almost 1/4, more than 1/4 of the, this failures have been occurred because of crimping. Another thing, people got to be very careful when they have two bends on both the sides. दोनों साइड में अगर बेंड होता है ना, तो उसमें ओरिएंटेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. Actually, in the later stage of my hose industry for the last about 15-20 years, wherever I had gone to an OEM, we have been vigorously discouraging bend on two sides. दो साइड में बेंड देने से, एक तो आप वो दोनों बेंड जो दे रहे हैं उसके बीच जो एक फेज एंगल बोलिए, या बहुत लोग ओरिएंटेशन एंगल बोलते हैं, व्हाटएवर यू कॉल इट, उसमें जो फेज एंगल, एक तो उसमें मेजरमेंट में एरर होने के चांसेस है. दूसरा है उसका जब आप असेंबली कर रहे हैं तो उस समय एरर होने का चांसेस है. एंड this results in twisting of the hose हो जाता है, and that is not at all desirable because it reduces your life like anything. I do not have the opportunity to ask for questions, otherwise there would have been n number of questions on this slide only. So we proceed, आगे बढ़ते हैं. अभी देखिए इसमें हम लोग जैसे बोले, now we start doing this, क्या क्या हो सकता है. पहले ही हम लोग we go to defect in hose. डिफेक्ट इन होज जो एक बहुत रैम्पेंट मिलता है, जिसको कंट्रोल अभी तक भी आई डोंट थिंक एनीवन कुड हैव कंट्रोल्ड बाय. होज में पिन होल. अभी क्या होता है, ये पिन होल कुछ असेंबलर्स सोचते हैं कि होज मैन्युफैक्चरर्स को टेस्ट नहीं कर रहे हैं. ऐसा नहीं है. जब मैनुअल एक्सट्रैक्शन होता है तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट दूसरे साइड में ब्लॉक करके वो एक प्रूफ प्रेशर टेस्टिंग सॉर्ट ऑफ हो जाता है. बट अनफॉर्चुनेटली दोज आर इन दिस ऑडियंस, स्पेशली authorities like Mr. UK Prasad and all, they will say कि पिन होल फर्स्ट उसमें बहुत समय डिटेक्ट नहीं होता है. So this is a challenge all through the, मैंने तो एटलीस्ट दो डिकेड से देखा है. मैंने जिस असेंबलर के भी, जिस होज मैन्युफैक्चरर के भी पास मैंने काम किया है, उसमें देखा है कि पिन होल निकलता ही है. इसको डिटेक्ट करना इज ओनली वे प्रॉब्ली इज टू डिटेक्ट कि आप ईच एंड एवरी होज असेंबली को टेस्ट करिए एंड उसको थोड़ा बम टेस्ट एक्सेट्रा करिए, क्योंकि पिन होल नॉट नेसेसरली फर्स्ट इंस्टेंस में डेवलप हो जाता है, ये बाद में भी हो सकता है. सो दिस इज वन बिग चैलेंज to detect a pinhole. Second, we come down to low adhesion between the inner tube and reinforcement. ये भीतर की ट्यूब का एंड reinforcement का लो एडिशन के लिए जब हम लोग इंसर्ट को, जब निपल को हम लोग पुश करते हैं तो बहुत समय वो थोड़ा सा इनर लाइनिंग को भी पुश करके अंदर की ओर ले जाता है. एंड that is mainly because of जब एडिशन कम रहता है बिटवीन द लाइनर एंड द रीइंफोर्समेंट. सिमिलरली जब
लो एडेशन रहता है, एडेशन बिटवीन द आउटर कवर एंड रीइंफोर्समेंट, उस समय बहुत समय होता कि स्काइविंग, मोस्ट ऑफ द असेंबलर्स आर स्टिल स्काइविंग, सो स्काइविंग करते समय उनका एडिशन कम दिखता है, तो उसमें थोड़ा आफ्टर सम टाइम वो ब्रेड एक्सपोजर का चांसेस रहता है, एंड ब्रेड एक्सपोज हो जाता है तो उसमें रस्टिंग हो सकता है एंड corrosion हो सकता है, which ultimately leads to failure. Now eccentricity, unequal tube thickness in the cross section, ये if not very frequently but होता है. Low abrasion resistance of outer cover, in such cases you should go in for high abrasion resistant hoses. If you see the application में बहुत अधिक रबिंग हो रहा है या कुछ उसमें, then either आपको high abrasion resistant में जाना पड़ेगा, सबका जैसे एक्स्ट्रा टफ, मेगा टफ, एक से बोलते हैं अल्ट्रा टफ, whatever it is. So standard cover से ना होके you got to go in for high resistance इसमें. फिर लो हीट रेजिस्टेंट कैपेबिलिटी कभी हो सकता है होज में कि temperatures are not very high. Whenever I'm talking about temperature is the media temperature, not the external temperature. ये लोगों का दिमाग में सडनली आ जाता है कि बाहर का टेम्परेचर बहुत अधिक है and all those things. But whenever I'm talking about temperature of the hose resistivity, ये तब हम लोग इनर ट्यूब के टेम्परेचर, मीडिया के टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं. Then of course low oil resistance in inner tube, ये भी होता है, but generally in cheap hoses, चाइना hoses में तो बहुत कम रहता है low oil resistance. Indian good quality hose में ये low resistance of inner tube कम दिखाई पड़ता है. But if someone is using the cheap variety of hose, उनसे पता चल जाता है कि उससे ये चीज आता है कि इनर ट्यूब में ये कम है, उसमें डीके होता रहता है. समटाइम ब्रोकन वायर हो ही सकता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन कि एक वायर ब्रेक कर गया या एक वायर वो हो गया. बट व्हाट द ऑपरेटर व्हाइल मेकिंग द होज, he should ensure that generally everywhere it is there कि put a red tape between the broken wire, two red tape. बट कभी कभी वो छूट जाता है, उसके ऊपर ही आउटर कवर एक्सट्रूड हो जाता है, ब्रेडिंग हो जाता है, सब कुछ हो जाता है. सो ये भी बहुत समय मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है. नाउ बहुत बार देखा गया कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से भी अधिक होता है कि एक्चुअल यूजर ने, even OEMs, we have seen that even OEMs, they calculate wrong ID of the hose. Wrong ID of the hose calculate वो करते हैं, and with the wrong ID of the hose, उसमें everything goes for a 6. आपका flow affect करता है, heat generation होता है, cavitations होता है, and so many things. So the ID of the hose, it is the primary responsibility not of the hose manufacturer or even the assembler. It is the primary responsibility of the user कि आप लोअर आईडी होज मत यूज करें. लोअर आईडी होज यूज करने से ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम होता है एंड फेलियर्स होता है. तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्या होता है कि कभी जब होज फेलियर होता है तब पूरा सब कुछ आके पड़ता है होज असेंबलर पर कि भाई तुमने होज सप्लाई किया था वो फेल हो गया है. बट दे डोंट लुक एट द रीजन ऑफ उनका भी रीजन रहता है to attribute to the failure कि आपने ठीक से होज आईडी नहीं कैलकुलेट किया है. आपको वहाँ 5/8 होज की जरूरत है, आप ½ इंच, आपने अगर नोमोग्राम यूज किया है तो द नोमोग्राम में अगर बीच वाला वर्टिकल लाइन एंड आपका जो क्रिएटेड लाइन में इंटरसेक्शन हो रहा है बिटवीन ½ इंच एंड 5/8 इंच, so you should select 5/8 inch, not the ½ inch. पर बहुत जगह टेक्नो कमर्शियल रीजन के लिए उन लोग ½ इंच चुन लेते हैं. दैट इज नॉट करेक्ट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द होज आईडी इज कैलकुलेटेड प्रॉपरली. सेकेंड वो होता है कि इनकरेक्ट सिलेक्शन में
फ्लूइड के साथ कंपैटिबिलिटी इग्नोर करते हैं. I have heard people, I cannot name them, जो ये बोलते सुना है, and not one, बहुतों को बोलते सुना है कि भाई जब हाइड्रोलिक में चल जाता है ये, तो हॉट वाटर में क्यों नहीं चलेगा, एयर में क्यों नहीं चलेगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फ्लूइड कंपैटिबिलिटी को इग्नोर मत कीजिए. वो इग्नोर करेंगे तो हमारा होस्ट फेलियर, असेंबली फेलियर के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं. फिर बहुत जगह होता है, स्पेशली जो रिग एरिया में सप्लाई करते हैं ऑल दोस थिंग्स, वहां पर नॉन परफोरेटेड कवर या जिसको पिन प्रिट कवर बोलते हैं उसको यूज नहीं करते हैं. जहां पर वॉलेटाइल फ्लूइड है या हॉट फ्लूइड है, जहां पर गैसियस एप्लीकेशन होता है, वहां पर उन लोग परफोरेटेड कवर यूज करना चाहिए, बट वो नहीं करते हैं. आइदर उन्होंने शायद होस्ट मैन्युफैक्चरर से मांगा ही नहीं होगा परफोरेटेड कवर, और मांगा भी होगा तो बाय मिस्टेक इनएडवर्टेंटली होस्ट मैन्युफैक्चरर ने भी वो ख्याल नहीं किया होगा, सप्लाई कर दिया होगा, और बाद में वो जाके आफ्टरवर्ड्स वो ब्लिस्टरिंग फॉर्म हो जाता है, ऑल दोस थिंग्स. सो वील कम टू द रेमेडीज, क्या करना चाहिए एंड ऑल दोस. The last one, what I have myself noticed, not in one case, I can even name them. रेलवेज ने बहुत सारे असेंबलर्स हैं, उन लोग R5, रेलवेज में बहुत R5 होज लगता है, उसमें बहुत लोग हैं जो R5R सप्लाई करते हैं. They say it is because of commercial reason, or it's because someone must have put it in their mind that R5 hose, R5R, that is R5 hose with a rubber cover. बहुत जगह हमने देखा है उन्होंने रेलवेज में, जहां पर हॉट ऑयल यूज हो रहा है, जहां पर जिसको यानी इन सब एप्लीकेशन के लिए ही R5 कॉटन टेक्सटाइल ब्रेडेड आउटर कवर में टेक्सटाइल ब्रेडेड R5 बनाया गया था, एंड उसके जगह में R5 with rubber cover यूज करते हैं. Actually, people like Mr. Prasad and all will vouch for what I am saying. R5R is nowhere in the specification. ये स्पेसिफिकेशन में है ही नहीं. इसको तो ये तो इंडियन वर्जन ऑफ R5 है, जिसको हम लोग बहुत जगह यूज कर देते हैं, जहां पर आउटर कवर में रबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ टेक्सटाइल होना चाहिए, वहां पर आउटर कवर में R5R यूज कर देते हैं. दिस इज द इंडियन वर्जन. R5R आपके किसी ऐसे स्पेसिफिकेशन में नहीं है. ओके, लेट्स मूव अहेड. इनफिटिंग इश्यूज. इनफिटिंग में देयर आर सो मेनी इश्यूज हो सकते हैं. एक तो होता है, वील टेक इट वन बाय वन. एक होता है कि थ्रेड्स अगर ठीक ना हो, तो टाइटनिंग जब किया जाता है, आज के दिन तो मेनली ओईएम्स में जो असेंबली लाइन में टाइटनिंग करते हैं वो टॉर्क रेंज से करते हैं, तो उसमें इशू नहीं होता है इतना. बट हम लोग सिर्फ ओईएम की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जहां पर इसके बाद क्या कर रहे हैं, आफ्टर मार्केट की बात कर रहे हैं, जहां पर मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑपरेशन, एमआरओ जिसको बोलते हैं, वहां की बात कर रहे हैं, जहां पर बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि इतना अधिक जोर से टाइट कर रहे हैं जिससे कि आपका पूरा क्रैक आ जाता है थ्रेड में. कभी कभी थ्रेड पूरा नट शेयर आउट करके बाहर आ जाता है. कभी मेनली यही चीज होता है कि ओवर टाइटनिंग नहीं करना चाहिए. पीपल विल अप्रिशिएट, हमने देखा है फील्ड में, मेनली नॉन ओईएम्स में, कि वो टाइट करने के लिए वो एक स्पैनर, जिसको पाना बोलते हैं, पाना लगा के उसके ऊपर एक बड़ा सा हॉलो ये पाइप लगा के उसमें वो करते हैं टू गेट मैक्सिमम टॉर्क. माइंस में तो हमने देखा लोग खड़े भी हो जाते हैं उसके ऊपर टाइट करने के लिए. सो थ्रेड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. थ्रेड अगर ठीक से नहीं होगा तो उसमें वो ओवर टाइटनिंग होगा, एंड डेफिनेट फेलियर्स. इसमें कोई फेल होने का चांस नहीं बोलेंगे, डेफिनेट फेलियर्स होता है. मिसमैच ऑफ सीलिंग सरफेस ऑन द मेटिंग फिटिंग्स. देखिए, हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल जीआईसी में 37 डिग्री 74 डिग्री का ये होता है. अब उसके मेल एंड फीमेल दोनों में मेटिंग सरफेस में सरफेस टू सरफेस मैच नहीं होता है.
लेट्स नॉट बी इन अ फूल्स पैराडाइज कि सरफेस टू सरफेस मैच होगा, कि मेल में भी एग्जैक्टली 37 डिग्री रहेगा, फीमेल में एग्जैक्टली 37 डिग्री रहेगा, सरफेस टू सरफेस मैच नहीं होता है. इट इज ऑलवेज अ लाइन कॉन्टैक्ट. ये एक लाइन कॉन्टैक्ट रहता है. एंड लाइन कॉन्टैक्ट जो है वो ठीक बनाए रखने के लिए द बेसिक थंब रूल इज, ये जो मेटिंग सरफेस में मान लीजिए जो फ्लेयर्स हैं जैसे जीआईसी फीमेल में, उसमें इंस्टेड ऑफ 37 डिग्री उसमें 39 डिग्री 38 डिग्री देना, यानी हायर साइड टॉलरेंस को देना चाहिए. एंड द रिवर्स, जब इन्वर्टेड फ्लेयर है लाइक बीएसपी फिटिंग्स में होता है, उसमें कोन एंगल में लोअर साइज का टॉलरेंस देना चाहिए. ठीक है. तो उसमें क्या होता है, आपका मेटिंग जो लाइन रहता है वो बार बार खोलने वो करने के बाद भी मेटिंग लाइन स्टेज विद इन द सरफेस ऑफ द फिटिंग एंड इट डजंट गो आउट ऑफ द सरफेस. आउट ऑफ द सरफेस चला जाएगा तो उधर से लीकेज होगा. Third point is low malleability of socket material giving rise to crack during crimping or during pressure spikes in application. Malleability generally अभी तक मेरे को जितना है कि 99% लोग एनीलिंग नहीं करते हैं सॉकेट का. सॉकेट बोलिए या शेल बोलिए या कैप बोलिए, जो मैंने आउटर में जो आता है उसको हीट ट्रीटमेंट नहीं करते हैं. इट शुड बी बेसिकली एनील, आइदर इट शुड बी एनील एंड इट शुड बी मेड फ्रॉम अ सॉफ्ट मटेरियल सो दैट उसमें एनफ मैलिएबिलिटी रहे कि जब आप उसको क्रिम्प कर रहे हैं तो वो अलोंग द क्रिम्प डाया वो क्रैक न कर जाए. तो अगर बहुत समय होता है क्रिम्पिंग के जस्ट बाद क्रैक नहीं भी किया, बाद में जब प्रेशर इंपल्सेस एंड प्रेशर स्पाइक्स जब आते हैं तब उसमें क्रैक आ जाने के चांसेस रहते हैं एंड अल्टीमेटली वहां से बस्ट हो जाने के चांसेस रहते हैं. देन ऑफ कोर्स eccentricity ovality in the nipple or socket giving rise to uneven crimp. एक तो दो तरह से ये ओवेलिटी आता है. एक्सेंट्रिसिटी तो आता है जनरली आपका जब मशीनिंग ठीक से नहीं हुआ है, अच्छे मशीन से नहीं किया है, तो एक्सेंट्रिसिटी तो अभी भी बहुत लोग क्लेम करते हैं कि दे आर वेरी गुड इन मैन्युफैक्चरिंग फिटिंग, वो लाखों फिटिंग बनाते हैं, बट आई हैव सीन एक्सेंट्रिसिटी इन देयर फिटिंग. वो इंसर्ट में या निपल में भी एक्सेंट्रिसिटी रहता है एंड आपके शेल में भी एक्सेंट्रिसिटी रहता है. सो लेट अस नॉट, एक्सेंट्रिसिटी रहता है. दूसरा ओवेलिटी. ओवेलिटी कैसे आ जाता है, एक हम लोग ने देखा है अक्रॉस द इसमें ओवेलिटी आता है एंड बाद में वो पता भी नहीं चलता है. हम लोग बहुत समय जब एम्बॉसिंग मशीन यूज करते हैं उसमें वेरिएबल प्रेशर देते हैं. कभी एम्बॉसिंग ठीक से नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ा सा उसको किसी ने उसको टाइट कर दिया सो दैट वो थोड़ा गहरे तक जाए, सो दैट इट डिग्स योर एम्बॉसेस डीप. बट उसमें क्या हो जाता है, व्हेन यू आर वो जो ब्रैडमा टाइप के मशीन्स में जब आप करते हैं उसमें रोल मार्किंग जब करते हैं तो उसमें ओवेलिटी आ जाता है. एंड वो सिंस आपका इंस्पेक्शन अगर इंस्पेक्ट भी कर रहा है वो तो इनकमिंग मटेरियल कर रहा है, जब एम्बॉसिंग नहीं हुआ है उसका कर रहा है, उसमें वैलिडिटी दिखता नजर नहीं आता है. एंड दिस इज अ साइलेंट किलर ऑफ द होज असेंबली. बहुत लोग बोलते हैं कि हमने सेम जगह से फिटिंग लिया है, सेम ये क्या कह रहे हैं क्रिम्पिंग डायमीटर यूज किया है, सेम होज यूज किया है, एवरीथिंग सेम, बट देयर इज अ फेलियर, वहां से लीकेज हो रहा है. One of the big reason which people do not realize that they have created an ovality during the embossing of the year. आज जो पिन डॉट मार्किंग करते हैं, जो वो आपका क्या बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स टाइप का जो मार्किंग जिसको पिन डॉट बोलते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं रहता है. बिकॉज उसमें यू आर नॉट ये आप शेल को या सॉकेट को या कैप को आप उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं. तो ये एक चीज रहता है जिसमें लोगों को पता ही नहीं चलता है. होज वाले फिटिंग वाले को बोलते हैं कि आपका गलती है, फिटिंग वाले होज वालों को बोलते हैं कि होज ठीक नहीं है, एंड थिंग्स लाइक दैट.
ये एक चीज सबको देखना चाहिए, जो इनके दिस इज अ साइलेंट किलर जो कि किसी को पता भी नहीं चलता है, एंड इन फिटिंग अरे होज असेंबलीज में प्रॉब्लम आ जाता है। शार्प एजेस बार्स ऑफ द फिटिंग डैमेज द होज ट्यूब, ये तो सब जानते ही आप लोग। इवन दैट आई थॉट आई पुट इट एज वन ऑफ द रीजंस, तो यू शुड टेक केयर ऑफ द शार्प एजेस एंड ऑल दोस थिंग्स। बहुत समय प्लेटिंग ठीक नहीं होता, लास्ट जो पॉइंट में दिखा रहा हूँ, बहुत समय प्लेटिंग ठीक से नहीं होता है, एंड वो उसका प्लेटिंग का वो आपका सरफेस का ही निकल आता है, फ्लेक जिसको बोलते हैं, फ्लेक्स निकल आता है, फ्लेक निकल आके उससे फेलियर होने के चांसेस रहते। सो यू शुड आई मीन सी क्या है कि होज जब मान लीजिए कस्टमर से आपका एमआरओ कस्टमर से फेलियर होके आ रहा है, तो उन लोग इतना नहीं पूछते, दे आर इंटरेस्टेड इन ओनली कमर्शियल रिप्लेसमेंट। आपने इमीडिएटली रिप्लेस कर दिया एंड खत्म, यू नो। शायद दो तीन बार सेम जगह से आया तो आप लोग थोड़ा देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट इट इज ऑलवेज बेटर कि आपका जब फेलियर हो रहा है, मैं इस प्रेजेंटेशन के आगे जाके कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा कि होज में आपका बस्ट हुआ है या होज फिटिंग के उसमें बस्ट हुआ है, बट ऑल जितने फेलियर जितने भी बस्ट हैं वो सेम टाइप के नहीं होते हैं। वो आइडेंटिफाई करना इट्स नॉट वेरी इजी कि किस लिए हुआ है, बट यू कैन मेक आउट दे आर नॉट द सेम। अगर सेम टाइप से बस्ट नहीं हुआ तो उसका रीजन भी अलग हो सकता है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए कि रीजन अलग हो सकता है, आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहिए, नहीं तो आप वही घूमते रह जाओगे कि असेंबलर होज वाले को बोलेगा, होज वाला असेंबलर वाले को बोलेगा, एंड मोस्टली जो कभी कभी एप्लीकेशन या इंस्टॉलेशन इश्यूज में होता है, वो इन लोग हिम्मत नहीं रहता कि ओईएम को जाके बोल दे कि आपका इंस्टॉलेशन गलत है, तो वो अपना करते ही जाता है, गलत चलता ही जाता है, फेलियर्स भी होता जाता है। दे कीप ऑन चेंजिंग देयर सप्लायर्स एंड दैट इज द consequence. Let's go ahead. So when we going for कि incorrect method हो रहा है, incorrect method के लिए जब हम लोग failures आता है, they are mainly एक बहुत बड़ा वो रहता है स्क्वायर कटिंग। स्क्वायर कटिंग अगर आपका होज नहीं होता, बिल्कुल 90% में कटिंग होना चाहिए स्ट्रेट। अगर कटिंग वो नहीं होता, उसमें वो जो कारपेंटर्स लोग जो एक ये यूज करते हैं ना एल शेप का, वो उससे देख लेना चाहिए कि आपका कटिंग स्क्वायर होगा कि नहीं। स्क्वायर कटिंग ना होने के कारण बहुत सारे फेलियर और बिकॉज ऑफ स्क्वायर कटिंग नहीं होता है, क्योंकि जब आप होज को फिटिंग में जब डाल रहे हैं तो उसका अगर बेवल कटिंग हुआ, टेढ़ा कटिंग हुआ, तो उसका एक एंड जाके बैठेगा, दूसरा एंड वहां से लीकेज के चांसेस बहुत रहते हैं। सो स्क्वायर कटिंग इज अ मस्ट। एक सेकेंड, स्काइविंग लेंथ में आप लोगों सबको टेम्पलेट बनाना, जो भी स्काइविंग करते हैं आजकल बहुत लोग हैं, एंड दैट इज गुड कि स्काइविंग से नॉन स्काइव फिटिंग में चले आए हैं, क्योंकि स्काइव फिटिंग बहुत दिन नहीं चलेगा। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि कस्टमर खुद बोल रहा है कि मेरे को स्काइव वाले होज नहीं चाहिए, स्काइव वाले असेंबली नहीं चाहिए। सो ये गोइंग अ लिटिल आउट ऑफ कंटेक्स्ट, स्काइव नॉन स्काइव में सबको जितना जल्दी हो सके नॉन स्काइव में यू शुड पुश ऑन टू नॉन स्काइव। इसमें आप लोगों को भी इजी रहेगा, क्योंकि जस्ट होज काटा एंड दोनों साइड में लगा दिया। तो इवन इफ यू हैव टू पे से 2-4 रुपए 2-4% 10% अधिक भी अगर फिटिंग में करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल अधिक रहता है, फिर भी आई विल से इट इज वर्थ इट, आपको उसमें जाना चाहिए। स्काइविंग में बहुत प्रॉब्लम्स है, स्काइविंग लेंथ ठीक नहीं रहेगा तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है कि एक्सपोजर हो जाता है एंड फिर रस्टिंग हो जाता है, फेलियर हो जाता है। फिर थर्ड पॉइंट आता है इम्प्रॉपर पुशिंग ऑफ द होज, नॉट टचिंग द। जनरली देखा गया है कि वो होज को या तो स्मूथ चला जाता है तो अच्छा है, नहीं जा रहा तो उसको किसी लकड़ी के उसमें ठोकते हैं हम लोग, उसको ठोक के अंदर डालते हैं, विच इज नॉट द प्रॉपर वे। उसमें कुछ लुब्रिकेंट लगाना चाहिए, एंड फॉर माइंड यू
जो सब लोग लुब्रिकेंट बोलते हैं, हाइड्रोलिक ऑयल लुब्रिकेंट नहीं लगाना चाहिए. इट शुड बी सोप वाटर. सोप वाटर लुब्रिकेंट लगा के आपको यूज करना चाहिए. एंड probably you can use a fitting pusher. फिटिंग पुशर को अगर आप यूज करेंगे तो फिटिंग पर आपका कोई ये जो जर्क या हैमरिंग का वो रहता है वो नहीं पड़ेगा, आपका स्मूथली अंदर चला जाएगा. एंड यू नो स्पेशली जो बेंड नोजेस रहता है उस पर तो बिल्कुल जर्क मार के या तेल के हथौड़ा मार के नहीं वो करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज ओवेलिटी हो ड्यूरिंग एम्बोसिंग एंड सॉकेट. जो आप मैंने अभी बताया लास्ट उसमें बताया कि एम्बोसिंग जब करेंगे बी वेरी केयरफुल, क्योंकि उसमें इट हैज टू बी वेरी, अगर आप पिन डॉट मार्किंग कर रहे हैं, रोल मार्किंग कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो ब्रैडमा टाइप का अगर एम्बोसिंग मशीन हो तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. अंडर क्रिम्पिंग, ओवर क्रिम्पिंग में सी अभी भी मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ दीज प्लेसेस देयर आर टू वेज ऑफ मेजरिंग द क्रिम्पिंग. एक तो है कि आप जो बहुत लोग करते हैं कि उन्होंने सॉकेट का या कैप का आउटर डायमीटर देख लिया एंड बोला इसको 3 मिलीमीटर प्रेस कर दे, 4 मिलीमीटर प्रेस कर दे, 2 मिलीमीटर प्रेस कर दे. दिस इज नॉट द राइट वे. आपका जितना भी वो हो, आफ्टर क्रिम्पिंग उसका डायमीटर कितना हो जाता है, दैट इज द राइट वे ऑफ मेजरिंग द क्रिम्पिंग. एंड जब आपको कोई नया फिटिंग ये सोर्स मिल रहा है मान लीजिए, एंड उससे आप 2, 4, 10 पीस आप क्रिम्पिंग करेंगे, तो आपको वो देख लेना चाहिए कि उसको थोड़ा सा वैलिडेशन भी करना चाहिए. अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग, कि आप 8-10 सैंपल बना के उसको प्रेशर टेस्टिंग कर लीजिए, बस प्रेशर तक ले जाइए. एंड द थंब रूल विच पीपल हैव बीन यूजिंग, कि उसको जब आप वैलिडेशन कर रहे हैं तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि निपल के जो इनसाइड डायमीटर है, निपल का इनसाइड डायमीटर पहले आप मेजर कर लीजिए. उसके बाद आप जब क्रिम्प करेंगे तब देखिए कि 10% से अधिक कोलैप्स नहीं होना चाहिए. मान लीजिए 19 या 18 है इनसाइड डायमीटर, तो उसको आपने मेजर करके लिख लिया. जब पूरा आपने क्रिम्पिंग किया तो 18 माइनस 1.8 दैट इज 16.2 से अधिक नहीं, 2 से कम नहीं होना चाहिए उसका आईडी आफ्टर क्रिम्पिंग. सो दैट इज जनरली अ थंब रूल, बट एग्जैक्टली उसी में एग्जैक्ट अच्छा क्रिम्पिंग होगा ऐसा कुछ नहीं, बट दैट इज द थंब रूल जिसके अधिक आप नहीं जा सकते हैं. एंड जो अभी पहले भी मैंने बताया, अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ क्रिम्पिंग डाया ऑफ वन ब्रांड ऑफ होज एंड फिटिंग टू विद द अदर ब्रांड. ये जब आप सोर्स दूसरे जगह से करेंगे तो वैलिडेशन जरूर कर लें, इससे आपका फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. क्रिम्पिंग मशीन का भी कैलिब्रेशन करना पड़ता है. क्रिम्पिंग मशीन का भी कैलिब्रेशन करना पड़ता है. करीब हम लोग सजेस्ट करते हैं, ये नहीं कि मशीन आपको भेजना पड़ेगा कैलिब्रेशन के लिए. आपके यहाँ जो मशीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे ही बोलिए कि आप कैसे कैलिब्रेट करेंगे. उसमें एक एलन की रहता है, एलन की से. सो आफ्टर यू मेक 10-15 हजार असेंबलीज जब आप बना ले, 10-15 हजार एंड्स जब आप क्रिम कर लें, उसके बाद इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप उसको मशीन को कैलिब्रेट करें. अब हम लोग चले आते हैं, होस्ट का प्रॉब्लम हुआ जिससे फेलियर हुआ, फिटिंग का प्रॉब्लम हुआ जिससे फेलियर हुआ. फिटिंग का होस्ट फिटिंग दोनों ठीक है, बट आपने ठीक से उसको असेंबलिंग ठीक से नहीं किया, स्क्वायर कट नहीं किया, या ओवर क्रिम्पिंग कर लिया, अंडर क्रिम्पिंग कर दिया, उसके लिए. बट अभी एक चीज आते हैं जो सब बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, क्योंकि यही सब बोलते हैं कि भाई हम इनको इतने दिन से होस्ट दे रहे हैं, इनको हम फिटिंग दे रहे हैं, असेंबली बना के दे रहे हैं, अभी तक तो नहीं हुआ, अचानक क्या हो रहा है. अचानक क्या होता है, कि अचानक उनका एप्लीकेशन थोड़ा शायद चेंज हो जाता है, जो आपको बताते भी नहीं होंगे, वॉट एवर इट इज. सो हमको ये देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द पैरामीटर्स जो आपके होस्ट फेलियर्स का एट्रीब्यूट करता है. क्या क्या पैरामीटर्स है जिससे होस्ट का लाइफ इफेक्ट होता है. फर्स्ट थिंग मैं देखूंगा जो कि
पीक प्रेशर इफेक्ट होता है। आपका सिस्टम प्रेशर, वॉट एवर इज द सिस्टम प्रेशर, इसमें जब डिपेंडिंग ऑन जब वर्किंग करता है तो उसमें प्रेशर सर्जेस आता है, सडनली प्रेशर बढ़ता है एंड स्पाइक्स होता है। ये जहां तक मैक्सिमम प्रेशर जाता है उसको हम पीक प्रेशर बोलते हैं। मान लीजिए आपका 100 बार सिस्टम प्रेशर है, होज आपका 100 बार का आपने लगाया है, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है कि वो ऐसा काम कर रहा है, वो मशीन जिसमें आपका होज लगा हुआ है या उस एप्लीकेशन में से लिफ्टिंग एप्लीकेशन में जहां पर लगा हुआ है, वहां पर सडनली आपका प्रेशर 100 से बढ़ के 130 चला जा रहा है, फिर गिर रहा है, फिर 100 में ही काम कर रहा है, फिर सडनली 130 या 125 चला जा रहा है। ये जो मैक्सिमम प्रेशर जो सडन सर्ज से आता है, इसको हम पीक प्रेशर बोलते हैं। एंड ये पीक प्रेशर के ऊपर आपका होज लाइफ बहुत डिपेंड करता है। आपको जो आपके बहुत लोग ही होंगे जो रॉक ब्रेकर अटैचमेंट में सप्लाई करते हैं, रॉक ब्रेकर अटैचमेंट में जो सप्लाई करते हैं, डिपेंडिंग ऑफ कहाँ का रॉक आप ब्रेकिंग कर रहे हैं या कहाँ पर डिगिंग कर रहे हैं, ये इसमें पीक प्रेशर स्पाइक्स इतने अधिक होते हैं कि ये बहुत कम लाइफ देता है। आपको सेम 1 इंच 4 SH वही मेट्रिक थ्रेड के साथ जो आपका मेट्रिक फिटिंग के साथ आप किसी दूसरे जगह में देखिए, वो शायद 1 साल 1.5 साल चल जाएगा, यहाँ तो 1 महीने 1.5 महीने के लाले पड़ जाते हैं। सो पीक प्रेशर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपका कहीं फेलियर हो रहा है, उनसे आप बोलिए कि थोड़ा पीक प्रेशर भी, जहां अगर कोई मशीन मैन्युफैक्चर, तो उनसे पीक प्रेशर आपको अगर पता चलता है कि मैक्सिमम इतना तक जाता है, मे बी एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए जा रहा है, बट फिर भी अगर पीक प्रेशर जाता है तो उसको आपको पता चलाना चाहिए और उस हिसाब से आपको होज लेना चाहिए, उस हिसाब से आपको होज सिलेक्शन करना चाहिए। जस्ट वर्किंग प्रेशर के ऊपर होज सिलेक्शन हरदम डिपेंड नहीं कराना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि ये जो आपका रेड हमने जहां ये मारा है, ये एरो वाला जो लाइन है, ये जो कट कर रहा है ब्लू लाइन को जहां कट कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये नीचे वाला बिल्कुल जो है 100 पीक प्रेशर कुछ अलग से नहीं हो रहा, वर्किंग प्रेशर एंड पीक प्रेशर सेम है, कोई स्टेबल ऑपरेशन है, कोई डायनामिक कंडीशन नहीं, कुछ नहीं वहां पर। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 200,000 साइकिल, ये नंबर ऑफ साइकिल इम्पल्स साइकिल का बोल रहे हैं, नॉट इन ईयर्स और इसमें। तो मान लीजिए 200,000 इम्पल्स साइकिल ये कर रहा है, इसमें क्या कह रहे हैं 130% ऑफ पीक प्रेशर में, यानी 30% हायर देन 130। सो इसमें आपको कितना लाइफ लॉस हो रहा है ये यहाँ पर मिल जाएगा, कितना लाइफ। आप देखेंगे कि अगर 150 में अगर हम लोग पीक प्रेशर है, ये वाला पीक प्रेशर जो दिख रहे हैं, इसको अगर 150 टाइम यानी 150% ऑफ द वर्किंग प्रेशर अगर करते हैं, यानी 100 अगर वर्किंग प्रेशर है एंड पीक प्रेशर 150 बार में करते हैं, तो उसका लाइफ देखिए आपका कहाँ तक उतर आता है। ये वाला अगर देखेंगे तो यहाँ देखेंगे लाइफ ये नीचे आके 50% लाइफ चला आया, यानी आपका बेस प्रेशर उतना ही है, बट कभी कभी वो पीक करके 150 में चला जाता है, 100 बार से वो 150 में जाता है, तो उससे उसका लाइफ कितना कम हो जाता है, ये यहाँ पर आपको मिल जा रहा है। सो पीक प्रेशर हैज गॉट अ बिग इफेक्ट ऑन योर। दूसरा जो है आपका मिनिमम बेंड रेडियस जिसको बोलते हैं, हर एक होज के आपके जहां पर कैटलॉग में उसमें देखेंगे लास्ट की ओर कॉलम रहता है जिसमें मिनिमम बेंड रेडियस रहता है, कि इतना बेंड रेडियस से अधिक उसको मोड़ना नहीं चाहिए। बट ये मिनिमम बेंड रेडियस जो है, ये होज के स्टैटिक कंडीशन में दिया जाता है। ये मिनिमम बेंड रेडियस इतना होना चाहिए, इससे अधिक उसको बेंड नहीं करना चाहिए। अगर उसको बेंड कर देंगे तो ये जो मिनिमम बेंड रेडियस का देखिए, जितना आप बेंड करेंगे उसको, उससे उसका प्रेशर एफिशिएंसी
उतना कम हो जाएगा एंड करस्पॉन्डिंग सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंट लाइफ जो है उसका भी कम हो जाएगा, मोर और लेस उतना ही। मान लीजिए आपका प्रेशर एफिशिएंसी 20% कम हुआ तो मोर और लेस आपका लाइफ कैन आल्सो बी उतना ही वो हो जाए। सो यू कैन से कि आपने इसको इतना बेंड किया है, एमबीआर से अधिक बेंड किया है तो उसका लाइफ कम हो जाएगा, फेलियर जल्दी हो जाएगा। बट एक चीज जो हम लोग भूल जाते हैं कि दिस इज ट्रू फॉर स्टैटिक कंडीशन में, जब होज रहता है कि जहां पर दो जगह जो होज जो लगा हुआ है वो दोनों जगह स्टैटिक है। ये नहीं कि एक जगह आपका फिक्स्ड है, दूसरा जगह मूव कर रहा है आपका। द मोमेंट ये मूवमेंट आपका आ जाता है, दैट मीन्स इट्स अंडर फ्लेक्स मोड, जिसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल मोड में रहता है। ये वाला दिखा रहा है कि अगर आपका फ्लेक्सिबल मोड में रहता है तो आपको जो कैटलॉग में बेंड रेडियस दिया हुआ है उसको आपको पहले ये करना पड़ेगा, क्या कह रहे हैं, मॉडिफाई करना पड़ेगा फॉर योर एप्लीकेशन, एंड उस हिसाब से आपका नया बेंड रेडियस आएगा। आप ये देखिए, ये जो लाइन जा रहा है ये नीचे जो है एक्स एक्सिस में दिया है कि कितना फ्लेक्सिंग हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर आपका एक है, दिस इज फिक्स, और यहाँ पर ये 90 डिग्री फ्लेक्स हो रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि 90 डिग्री में एक्स एक्सिस में देखना पड़ेगा कि इसका वाई एक्सिस में कितना ये आ रहा है। इसमें हमने जो एक लाल से दिया है, देखिए it is 70%, we are giving 70% flexing and the bend factor is 1.2. So whatever bend radius is mentioned in your catalog, that has to be multiplied by 1.2. So अगर किसी होस्ट के लिए आपका catalog bend radius is given as say 200 and it is flexing by 70 degree, that means that 200 has to be multiplied by 1.2 or 1.3, जैसा भी इस ग्राफ से जैसा आता है। So bend radius को वो 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, that becomes your actual, I mean जिसको derated बोलते हैं, derated bend radius, and now you cannot go below that bend radius. आप जब 200 into 1.2 करके 240 आ रहा है, now your near actual bend radius for that application becomes 240 millimeter. आप उससे अधिक बेंड नहीं कर सकते, बेंड करेंगे तो आपका इस हिसाब से आपका लाइफ कम हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है, दिस इज एक्चुअली वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर, आप लोग तो सब लोग असेंबलर्स हैं, सो आपको ये जरूरत नहीं पड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली डू यू नो हमारे यहाँ पर वेरी फ्यू OEMs also take this into consideration. वो देखते ही नहीं, स्ट्रेट अवे कैटलॉग में देखा फलाने होस्ट का बेंड रेडियस इतना है, चलो हमारा इतना बेंड नहीं हो रहा है, दैट्स ऑल। ये नहीं देख रहे कि वो फ्लेक्सिंग मोड में है, एज उसका बेंड रेडियस का बेंड फैक्टर दैट इज एन से उसका बेंड रेडियस करेक्शन करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन गो इन फॉर द राइट इंस्टॉलेशन। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन फिर मीडियम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप देख लीजिए आपके कस्टमर जो है कौन सा मीडियम है उनका, उस हिसाब से इसमें तो people are there like UKP and all those things, look, they can deliver a lecture for 2-3 days, if not 2-3 session. इसमें इतना, this is so important कि किसके लिए कौन सा, but only thing जो हमारे assembler colleagues को हम लोग suggest करेंगे that you should make it very clear कि ये हर you see any good hose catalog, you will find this chemical resistance table at somewhere at the end of the ये catalog. इसको आप लोग जरूर से इससे करके then only select for a hose या जो भी वो करते हैं। Otherwise क्या है, hose failures material of say of medium के composition से बहुत अधिक, you know, it's very important to find out whether, because हम लोग अब कुछ नोशंस हम लोग लेके घूमते हैं, प्री कंसीव्ड नोशंस लेके घूमते हैं कि चलो ये हाइड्रोलिक ऑयल के लिए ठीक है तो गैस के लिए भी, अरे वाटर में क्या है, वाटर में तो अच्छा ही होना चाहिए।
अगर हाइड्रोलिक ऑयल में ये 1000 psi तक जाता है तो वाटर में तो आराम से चला जाएगा, उससे अधिक चला जाएगा, विच इज नॉट दैट वे। अगर हॉट वाटर है तो उसमें वो नहीं जाएगा, अगर हॉट एयर है तो और नहीं जाएगा। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जब आपका फेलियर होता है, मेरे कहने का मतलब क्या है, आप आई एम नॉट आस्किंग यू टू पिक अप ऑर्डर आप ले रहे हो देख के कि पूरा मीडियम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, फिर तो आपको जिंदगी में वही करते रह जाओगे, थियोरी में ही रह जाओगे, ऑर्डर नहीं। बट व्हेन देयर आर फेलियर्स, आप देख रहे हो कि कहीं से रिपीटेड फेलियर्स आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो यू शुड गो इन फॉर अ लिटिल बिट ऑफ पूछताछ करना चाहिए कि लिटिल बिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की क्यों फेलियर होता है। तो उसमें मीडियम प्लेज अ वेरी वाइटल। So these tables are very useful. You can see this. ये देखिए फ्लूइड मीडियम में, इसमें देखिए लिखा हुआ है ब्लिस्टरिंग ऑफ होस कवर वेयर गैसियस फ्लूइड इज बीइंग यूज्ड। उसमें आपका परमेबिलिटी एक चीज होता है, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि परमेबिलिटी में चला जाऊँ तो अभी बहुत 1 घंटा उसी में निकल जाएगा। बट अगर गैस है, फ्लूइड में गैस है या गैसियस फ्लूइड है तो परमिएट करके बाहर आ जाता है, ब्लिस्टर फॉर्मिंग हो जाता है। ये ब्लिस्टर फॉर्मिंग इज अगर मान लीजिए आपके किसी कस्टमर का ऐसा ब्लिस्टर फॉर्मिंग में बहुत, इट्स वेरी कॉमन टाइप ऑफ, ये बहुत से कस्टमर उसको उठा के उसको बदल देते हैं, उस असेंबली को बदल देते हैं, आपके पास कंप्लेन कर देते हैं। अब आपको जो करना चाहिए, अगर कभी ब्लिस्टर फॉर्मिंग हो रहा है, द बेस्ट थिंग इज यू आस्क द कस्टमर और यू गो योरसेल्फ एंड उसमें आप एक पिन लेके उसको पंक्चर कर दीजिए जहां पर ब्लिस्टर है। अगर उससे कोई ऑयल निकल रहा है, that means there is something problem in the entire hose assembly, maybe due to the whatever reason, but there is some problem, you should replace it. But quite frequently उसमें से सिर्फ हवा निकलता है ना, आपने ब्लिस्टर को पंक्चर कर दिया है, फ्लैट हो गया बस। क्योंकि वो ब्लिस्टर अगर बड़ा होता जाएगा तो एक समय आएगा वो फट सकता है, एंड फट के it exposes your wire braid inside and that get exposed to corrosion and rusting, वो जाके फेलियर हो जाता है। So if there is a blister on the surface of the hose, तो आपको उसको पंक्चर कर देना चाहिए और देखना चाहिए कि उससे हवा अगर निकल रहा है तो there is no issue. Next time whenever you are supplying him, you give him a pin prick या outer cover perforated आप वो दे सकते हैं, तो उसमें आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। बट द इमीडिएट सॉर्ट आउट, पहले आप उसको पंक्चर करके देख लीजिए कि ब्लिस्टर जो है उसमें हवा है कि उसमें ऑयल है। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट में हम लोग जा रहे हैं, ये जो मैं बता रहा था, विच आई वाज टेलिंग यू। तो इट्स नॉट जस्ट and fluid incompatibility के लिए, जैसे like you can find blisters outside on the outer cover also, you'll find the bulge in the inner tube also. So fluid compatibility is one thing which one should be very careful of. आज के दिन बहुत सारे ऑयल्स ऐसे यूज कर रहे हैं जिसको लोग बोलते हैं इको फ्रेंडली ऑयल एंड ऑल दोस थिंग्स। उसको उससे जो है ये कंपैटिबिलिटी का इशू आता है, उससे फॉर्मिंग बहुत होता है। So you got to keep that in mind also. कितना टाइम हो गया नितेश? दादा 4:15 हो गए हैं, क्या 10 मिनट और लगेंगे? हाँ, कितने टाइम तक अलाउड है सॉरी? 4:30 मिनट में 10 मिनट में कंक्लूड करिए दादा। हाँ ठीक है, ठीक है। Then another thing which this is very important, I tell, आप इस कर्व को देखिए। हम लोग हमारे दिमाग में एक चीज बैठा रहता है कि whatever hose we are using, suppose the operating pressure is written, say I'm taking for ease sake, I'm taking 100 bar. अगर आपका 100 बार का ऑपरेटिंग प्रेशर है और उसमें कभी कभी आपका ऊपर चला जाता है, तो लोगों का कहना है बहुत कि ये तो आपने डिजाइन किया है 400 बार में, 4 टाइम्स में आपने जब डिजाइन किया तो क्या फर्क पड़ जाता है अगर हम उसको 120 बार 200 बार में यूज करते हैं, क्योंकि आपका बस तो करेगा नहीं 4 टाइम से पहले। बट ये अगर आप ग्राफ को देखेंगे, ये कर्व को अगर आप देखेंगे, दिस इज अ रियल लाइफ कर्व, इसमें आप देखेंगे कि
100 बार के जगह में जस्ट 50% हायर में यूज किया, दैट इज 150 बार में यूज किया, एंड द लाइफ रिड्यूसेस बाय 70, लाइफ रिडक्शन हो जाता है, 70% लाइफ रिडक्शन हो जाता है। यानी आपका जो होज 1 साल चलना चाहिए वो 3-4 महीने में फेल हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द बिग रीजंस जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। सेकेंड है टेम्परेचर का भी इफेक्ट रहता है। ये जो आपका टेम्परेचर है ये इफेक्ट करता है आपके प्रेशर एफिशिएंसी पे। अगर आप देखें यहाँ पर तो कोई भी अगर आपको पूछता है कि ये तो भाई इट इज रिकमेंडेड अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कैन आई यूज इट एट 120 डिग्री? यस, बाय ऑल मीन्स यू कैन यूज इट, बट देन डू नॉट एक्सपेक्ट अ फुल लाइफ। एंड ये इससे क्लियर आ जाता है कि आपका कितना प्रेशर एफिशिएंसी कम हो रहा है, एंड correspondingly more or less it's clear कि उस लाइफ भी ऑलमोस्ट उतना ही कम हो जाता है। So these are factors, I am going through it hurriedly. अब ये जो मैं बोल रहा था कि डिफरेंट रीजन के लिए फेलियर्स होता है, बस्ट हो रहा है, इसमें भी देखिए बस्ट हुआ है, बट टाइप ऑफ इसको जो इन्वेस्टिगेटिंग जो लेबोरेटरीज में जनरली हमारे होज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लेबोरेटरीज में रहते हैं, उनका वो देखते हैं किस टाइप का फेलियर हुआ। बस्ट हुआ है तो ठीक है, बस्ट हुआ है, दे आर नॉट डिनाइंग द फैक्ट, बट वेदर उसमें किस टाइप का, जैसे इसमें देखिए इसमें जैसे फेलियर्स बहुत सारे तार टूट गए हैं, देयर इज अ ब्रेकेज एंड ऑल दोस थिंग्स, इट हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड द इंपल्स लाइफ। If the hose is meant for say 2 lakh cycle or 5 lakh cycles, whatever it is already completed. So उसमें जान नहीं बाकी है। See, उसमें भी फेलियर था, बस्ट फेलियर, ये भी बस्ट फेलियर है, but this is something else caused by corrosion of the wire reinforcement. इसमें corrosion हुआ है किसी तरह से, शायद वहां ब्लिस्टर हो गया था, ब्लिस्टर फट गया है, the wire is getting exposed to, so you know, कहने का मतलब ये है कि all failures are not the same and all failures do not have the same root cause. आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा. Generally, I have noticed in so many years of working with the industry, I have seen people, अगर मान लीजिए होज मैन्युफैक्चरर से होज आया, उसको किसी रीजन से उन्होंने सप्लाई भी किया या उनके टेस्टिंग में ही फेलियर हो गया, वो चुपचाप बैठ जाते, होज मैन्युफैक्चरर बताते नहीं है. जब ये ब्लॉसम अप करता है, बहुत सारे फेलियर हो गया, देन दे कंप्लेन टू होज मैन्युफैक्चरर. You should not, okay, maybe you do not register a complaint with the host manufacturer, ask for a replacement, but at least आपको as a feedback उनको देना चाहिए कि भाई हमारा ऐसा फेलियर हुआ है, this is the failed sample, आप थोड़ा इसको एनालाइज करके बताइए कि क्यों फेल हुआ है. That's very important. ये देखिए ये भी फेलियर हुआ है, but it has got totally different reason and उसका solution भी अलग है. So in view of the paucity of time, I am not going into much details, but I just wanted to make you feel the need of going to a little bit of, my host fail ho gaya, but that FAIL word has got so many meanings, so many reasons. So you'll have to go in for those reasons and all. ये देखिए, this is another failure जिसमें inner cover, inner tube जो होता है, इसको देख के it is because of fluid incompatibility once again. This is again the case of जो fluid migration बोलते हैं उसको. So you got to do a little bit of analysis, or you got to give it to the host manufacturer जिससे आपने लिया है, उसको आप दीजिए कि इसको थोड़ा एनालाइज करके देख लीजिए. हमको आपको फ्री रिप्लेसमेंट देना नहीं है, बट एटलीस्ट आप एनालाइज कर लीजिए कि ये हो रहा है, रूट कॉज देख लीजिए, so that you do not, the repetition is not done, फिर से failure होके then वो commercial आ जाता है and all those things. Now installation is, I think, one of the very very important things जिसको सब लोग overlook कर जाते हैं कि installation के लिए कितना failure होता है. Mainly 2-3 मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2-3 का ही ख्याल रखिएगा. अधिक आप इनिशियली नहीं भी रखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है.
One is this. एक तो एज अ थंब रूल बोलते हैं कि फिटिंग से बाहर निकलने के बाद 2 times of the OD it should not bend. उसके बाद बेंड करे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें फिर बहुत स्टीप बेंड हो जाता है, फेलियर का चांसेस बहुत हाई हो जाता है. नाउ आप बोलोगे कि फिर इसको हाउ टू एड्रेस इट. एड्रेस में एक तो हो सकता है कि यू टेक अ बेंड फिटिंग. वहां पर यहाँ पर जैसे इस केस में देखिए 45 डिग्री का फिटिंग लेने से शायद अच्छा रहता है. एंड बट उसके अलावा भी रहता है, बेंड रेस्ट्रिक्टर्स रहते हैं जो कि वो स्प्रिंग जैसे ही दिखते हैं. आपने बेंड रेस्ट्रिक्टर लगा के उसको स्मूथ ट्रांजिशन किया, फिटिंग से निकलने के बाद स्मूथ ट्रांजिशन करके आता, फेलियर के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाता है. सबसे बड़ा फेलियर के चांसेस अभी ये जो मैं ऑल थ्रू मैं जिंदगी सबको बताता आया हूं कि while installation it should not twist. Now that is a very very important point, and I have worked for the 3 global leaders in hose manufacturing, and सबने यही डेटा मेरे को बताया है, हमको बताया है कि even if there is a 7-degree twist, the hose life is reduced by 90%. यानी 7 डिग्री का अगर ट्विस्ट हुआ तो उसका होस का लाइफ 90% कम हो जाता है. तो ये आप लोग देखिएगा. एंड ट्विस्ट यू कैन मेक आउट कि जहाँ प्रिंटिंग हुआ वो दूसरे लेवल में चला गया, दूसरे साइड में चला आया. दैट इज वन थिंग which is I can give you n number of examples which I will not at this forum I'm not giving, but I can spend hours together. मैं आपको एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ, आपको फोटोग्राफ्स दिखा सकता हूँ, रियल लाइफ फोटोग्राफ जहां पर कि बड़े बड़े OEMs ने इंस्टॉलेशन करवाया है विदाउट कीपिंग दिस ट्विस्ट इन माइंड. सो दिस इज अ बिग थिंग व्हिच वन शुड. एंड थर्ड इज एब्रेशन. एब्रेशन में भी देखना पड़ता है कि एक तो आपका मेनली हो गया मिनिमम बेंड रेडियस, ये इसमें आ जाता है, फिर ट्विस्ट में आ जाता है, देन एब्रेशन को आपको देखना पड़ेगा. देन एनी होल्स में आप देखेंगे कि फेलियर्स के डूज डोंट्स रहते हैं. इसमें आई एम नॉट गोइंग, ये आपको होस कैटलॉग्स मिल जाएंगे. इसमें बेसिकली ये जो क्रॉस किया है, ये जो टिक मारा है, दिस बेसिकली नथिंग. जहां पर क्रॉस किया आप देखेंगे कि आइदर बेंड रेडियस कम हो जा रहा है बिलो द रिकमेंडेड बेंड रेडियस और समथिंग लाइक दैट, यू नो. सो इसलिए ये हर एक में वही चीज है, या तो कहीं रबिंग हो रहा है, या आपका कहीं यू नो ट्विस्ट हो रहा है. 2-3 प्लेन में जब हो जाता है तो ट्विस्ट हो रहा है. तो ये दिस इज यू विल फाइंड बहुत जगह, हर कैटलॉग, अच्छे कैटलॉग मिल जाएगा. आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी टाइम ऑन दिस. एंड ये देखिए सब है. इफ यू वांट आई कैन शेयर इट आल्सो. सो दैट इज फॉर दिस स्मॉल सेशन. इसमें बहुत बोला जा सकता है, बहुत डिस्कस किया जा सकता है. This is some session which I again repeating. I always feel that we should have a one-to-one session जहाँ पर लोग question पूछ सकते हैं and all those things. तो वो इसमें is not possible. That's why if you have got any question, if the FCP index allows someone to come by audio या chat में क्या दिया वो देख लेंगे. अगर ऑडियो अभी 5-10 मिनट बाकी है, if someone is allowed for the audio also. Mr. Surikant has asked whether they can get this PPT. Means, so sir, actually what we are doing, we'll be sharing the recording of today's webinar on YouTube channel also. So you can watch, if you or your team can watch this entire technical webinar on YouTube. But we will not be providing this copy of this PPT. Who is the gentleman, Nitesh? Mr. Surikant Dadij. Acha. From which organization? He has not given the name of the organization. Acha. Okay, fine. Yes, Mr. Suri, you can do that. Prasad sir, any question? UK sir?
not question, but it was very like informative, very interesting. Always listening from Ambarish ji. From my experience on the like my addition on the host failure, I'm not like insulting anyone by or like anything. My experience is that in Indian context, host assembly working depending on lot of luck. Because as Ambarish ji told, like the hose manufacturer, they means of course there are two types of hose manufacturer. One who has all validation facility and one who has only manufacturing facility. They do not know whether their hose will pass or fail in actual condition. So two are there. So like just I will focus on those who has the validation facility. They take a lot of care to validate the hose, fitting, everything. When the hose goes on the market, like the qualified boy, but then the treatment is that replacement, it is used as a replacement of already somebody existing. So there is no collaborative approach of hose manufacturer and the assembly manufacturer. It's simply like the commercial, the salesperson and the purchase manager, those two interact. Okay, give me yours. How much is the price? Price finalized. Disregarding, you see in if you see SAE or EN, the OD range, braid OD range is very wide. So you never know which company has chosen which range of the dimension. So dimension from manufacturer to manufacturer will change. But in fact, what is happening, fitting is same with the fitting manufacturer. He will do the same crimping disregarding whether the dimension is same or different. As a result, what will happen? If your luck is good, assembly will work. If not, then failure will happen and ultimately blame will come. Your hose is no good because my existing hose is working under this condition. So like only request I have, and the moreover, the hose manufacturer will not annoy his customer, because the customer will say, I am working in this field last 30 years, 40 years, so you should not teach me how to make assembly. So that is another point of contradiction comes. So it goes for a compromise. Rather, my suggestion is like to do some collaborative work with the hose manufacturer and assembly manufacturer. If somebody is offering the hose, just work with them. Okay, I'm giving you 2-3 assembly. Just can you do it? If nothing, can you do the bus, whether it is okay or not? So at least you can start with the best foot. If not if the like totally best, at least the good foot you are putting in the field, because any failure anywhere, it's not acceptable, like the good for even assembler or the hose manufacturer. Nobody likes their hose or assembly to fail. But unknowingly these things happen, and just we take lot of care. What happens, they go by, if the hose is there, they go by recommended fitting, recommended the crimping. But here hose is there, fitting is there, but again the crimping goes as per the existing assembler who is doing. We should consider the dimension variation. This is a very big factor in hose failure. That's what I want to share from my experience. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, Prasad, sir. So any other question from the participants? So no question from anyone. So thank you as we already, everyone for patiently hearing yes, sir. on a Saturday afternoon. It's it's time to pack up, go home for the weekend, and especially after COVID, now there is a relaxation. So maybe a bottle of beer and then a
nap, afternoon nap. So thank you for giving me time, sacrificing those afternoon naps on a Sunday afternoon. And वो बोलते हैं ना इंशाल्लाह मुलाकात होगी, FCPCon आने वाला है, ठीक है? So thank you. Thank you. थैंक यू अमरीश सर. इनफैक्ट हमको आपको थैंक्स बोलना चाहिए कि यू हैव स्पेंड योर वैल्यूएबल टाइम ऑन सैटरडे and you are a very busy person and sparing time for this webinar, like you have already spent 2 hours on this, so we are very thankful to you. And definitely whatever like different analysis you have given regarding hose, different type of hose assembly failures, maybe because of hose, because of fitting, or because of wrong crimping, and what are the different approach we should have to avoid all this failure. So I think for all the assemblers it should be very useful and they can adapt this whatever you have explained today. It will be very beneficial for them. So definitely would like to have one full day technical webinar, maybe in Pune or any other place, because lot of people, they are asking to have this type of webinar where like entire like for 1 day or 2 day, from basic hose to fitting to this thing hose failure or assembly failures, entire this program can be scheduled for 1 or 2 days. So we are just physical planning for training that. session, physical, because lot of inquiries we have received from assemblers and professionals and OEM also, where they would like to have like VAV analysis or proper installation of the hose assemblies. So entire program can be conducted, and definitely we are looking for that. My pleasure. So My pleasure. so we will be requiring your support on that that thing also. So thank you all the participants, and our next session, next technical webinar will be on 23rd of April. So with some other topic or for some with some other subject, we'll be conducting this technical webinar on 23rd. And in the meanwhile, by Monday we will be sharing the link of YouTube, wherein the complete recording of this webinar will be available. So anyone can go through that, or they can share with their team or with their acquaintances. So in case of any question, any query, these phone numbers are given on the screen, email IDs already given, and you can approach on these numbers. So whatever queries are there, we'll try to resolve that. So thank you very much, Ambarish sir, and all the participants. Thank you everyone. Thank you.